ये एबीसीडी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, लेकिन ये एबीसीडी आते ही आपको ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि आपको एबीसीडी आ गई है। इसके बेस पे आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक क्यों सिखाते हैं हमको? उनको पता है कि ए फॉर एप्पल सीखने से कुछ तो वर्ड्स लर्न होंगे, प्लस रीडिंग की प्रैक्टिस होती है साथ में। सो ए इज आ, बट नाउ आई विल राइट सम वर्ड्स, कि वो वर्ड भी दिमाग में रहेगा तो आपकी प्रोनाउंसिएशन का काम भी इजी हो जाएगा। सो आ वी, वी मीन्स फोर, जैसे ए फॉर एप्पल, तो फोर के लिए यहां वर्ड लिखूंगा मैं वी, वो सबके लिए सेम रहेगा। आ, दिस इज आ वी आंटोन। ये जर्मन नेम्स हैं ज्यादातर जो लिखने वाला हूं मैं। आप देखो इसका भी एप्पल सोच रहे हो कि कुछ मीनिंग निकलेगा। आ वी आंटोन, बे वी बेरटा, सेवी सेत्सर, डेवी डोरा, एवी एमिल, एफवी फ्रीड्रिश। साथ में लिख देता हूं डे ए एफ, एफवी फ्रीड्रिश, गेवी गुस्टाफ, हावी हाइनरिश, ईवी ईडा, योट योटवी यूलियस, कावी काउफमन, एलवी लुडविश, एमवी मार्था, बेटर यू से मार्टा, एनवी नॉर्डपोल, ओवी ओटो, पेवी पाउला, कुवी क्वेले, एर वी रिशार्ट, एसवी जामुएल, एस वी जामुएल, टेवी टियोडोर, उवी उलरिश, फाउ वी फाटर, वेवी विलेल्म, एक्सवी Xantippe, Ypsilon, Ypsilon V Ypsilon, Seth V Zacharias। ये और ये वी एर्गर, यो oder यो वी योल, यू oder यू वी यूबर, etc. वी फूस, यू कैन से फूस। ओके, सो ये सारे आ बे से डे तो है ही, ऑफ कोर्स ये तो लर्न करना ही है आपको। आ बे से डे ए, एफ गे हा ई यॉट का, एल एम एन ओ पे कू, एर एस टे उ फाउ वे एक्स, इप्सिलॉन सेथ, ये एक येरगर या ये, आई शुड राइट ये इज एरगर, यो यू एटसेथ। ये तो आपको रखना ही है याद।
बट जब आप इनके साथ में याद करोगे आवी अंटोन, तो हर बार आपके दिमाग से अंटोन जब दिखेगा तो याद आएगा कि ये आ है, इसीलिए तो अंटोन बोल रहा हूं मैं, नहीं तो एंटन बोलने की कोशिश करोगे, इंग्लिश की आदत छूटेगी इंग्लिश वाली अगर इनको लर्न करोगे तो। बे तो है ही, लेकिन बे को बी नहीं बोल दो आप, सो आपके दिमाग में हर बार आएगा बेरटा, सो बे मीन्स इट इज बे ओनली। सो सेत्सर, डोरा, एमिल, फ्रीडरिश, जो आपको रीडिंग के रूल मैंने कराए हैं पिछली क्लास में, उससे भी आपको पता चल रहा होगा। अच्छा, इसलिए हमने एमिल बोला बिकॉज इट इज ए, एंड वाई वी से फ्रीडरिश बिकॉज द रूल यू रिमेंबर नाउ, आई ई इज ई एंड सी एच इज शे एंड सी एच इज ऑल्सो खे, बट हियर इट इज शे because before ch a o u is not there. Generally before ch, if a o or u is there, in that case ch becomes kh, but here it is not kh, here it is sh. So फ्रीडरिश से भी याद आएगा ये रूल। अच्छा, फ्रीडरिश, why sh? Because before ch a o u is not there, so that reading से गुस्ताफ, फे क्यों, फाउ, that's why Gustav. Say क्यों? Because after S vowel is not there. After S, if there is any vowel a, e, then S becomes z. S plus vowel, S becomes z, but here it is not z because after S there is no vowel. So Gustav. Heinrich, why high? Because E-I is I. Hein. Rish against sh, not kh. Ida, D is d, so Ida. Julius, yeah, not ze. Yacht, so yeah. That's why for reading also it is very important. Julius against se, because after S vowel is not there. After S, if there is a vowel, it becomes z, but here it is se only. Kaufmann, Kaufmann, it is double N. Whenever double consonant is there, it becomes half reading mein. So Kaufmann. Ludwig, why Ludwig? Ish. Normally G is G, and if G comes at the end, it sounds like K, but if IG is there at the end, it is Ish. So they are actually also the explanation of reading rules. Aussprache है, कैसे पढ़ते हैं जर्मन को? So IG is Ish at the end. That's why it is Ludwig and not Ludwig or something else. Marta, why ta? Why not tha? Because H in the middle is silent and A is always A, A is A, and double A is also A. So this is Ma, Marta, not tha. H is silent in the middle. This is Nordpol, D only. Otto, again double T means double consonant becomes half, Otto. Paula, A, U is Au, so Paula, A again. Quelle, Richard, ट हल्का सा ट साउंड करेगा अगर डी लास्ट में आए तो। नॉर्मली डी इज ड, नॉर्मली डी इज ड, बट इफ डी कम्स एट द एंड इट साउंड्स लिटिल काइंड ऑफ ट। टिंट, प्लांट, रिशार्ट। एस इज जामुअल, नाउ ज, while after S vowel is there. After S, if any vowel is there, S becomes z, so here zamu and not mu, because this is u, and if it is this, then it will be u, so here zamu, u is there. Zamuel, el is l, er is er. Then Theodore, again H in the middle is silent, so Theodore. Ulrich, ch, before ch a o u is not there, that's why sh, Ulrich. Vater, v is fa. So consonant में एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, आफ्टर ए कॉन्सोनेंट, राइट, कोई भी आपको मात्रा लगानी है, that will be decided by vowel only. So यहाँ पे फाउ तो है, बट ये सारा न्यूट्रल हो जाता है, ओनली फे बचता है, एंड देन ए, आ लिखने से इसको फा बनाया इसने, इसको फाउआ नहीं कर देंगे हम लोग, फाटर. एंड ई आर, देयर इज ऑल्सो रूल ऑफ ई. ई इज नॉर्मली ए, double E is also A, but E at the end is a, and ER at the end will be and only R at the end will be also like Natur, Nuer, N-U-R, so that would be Nuer. Nur nahi hoga wo, Nuer. Wilhelm, Xantippe, again double P is there. Epsilon,
Y sounds like E, epsilon. Okay. Sakharias, Z is half ta and se, like what's. So sa and then kha, why kha, ch, and before ch, a is there. So ch becomes kha here. So sakharias. Then yerger, ye or a both is okay. Yo, you and etc. alles klar. So ये नॉर्मल एबीसीडी ही रीडिंग को इस तरह से इंप्रूव करेगी है अगर आप ये वर्ड्स हाथ में लर्न कर लेते हो तो.